very patient when you're having conversation, guys. And please, the problem with us is कि हमारा फोन हमेशा हमारे साथ रहता है. हम अगर अपनी मदर से ये भी बात कर रहे हैं ना कि आज खाने में क्या बना है, तो ध्यान होता है आज खाने में क्या बना है. Oh my God, why? Why can you not leave your phone? Okay, I understand everyone has work and everything, but at least on your dinner tables and everything, keep your phone aside. आधी प्रॉब्लम तो हमारी पेशेंस यही हमारा फोन की वजह से, क्योंकि suddenly a message would come or I agree. Instagram would buzz and I'm a big phone addict, so I can say that. I can हाँ, understand. Yes, मुझसे कोई बात करता है मेरा आधा ध्यान फोन में ही होता है, which really annoys the opposite person. of course. And And I've not been just trying hard to get annoys, rid of it now. yeah, and Shweta, on your personal level also, you would know that you're losing on your patience क्योंकि आप multitask. It's not easy. So, what we always say is I tell my clients, be conscious of what you're doing. Okay, not cautious, but be conscious. When I tell them to be here and now, live in the moment. Live in the moment में आप एक चीज अगर अच्छे से करोगे then you will be able to live in that moment constructively. लेकिन होता है कि हम खाना बना रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, वहां से फोन पे भी बात कर लेते हैं, बेल भी बज जाती है एंड वी डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. फिर सब्जी सड़ जाएगी एंड देन वी पुट इट The ऑन आवर किड्स कि मेरे बच्चों की वजह से मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और मेरी सब्जी सड़ गई. एंड देन अगेन द क्रिटिसिज्म विल कम, मम्मी आपको खाना बनाना नहीं आता, एंड इट गोज ऑन. So guys, whenever you're it doing goes something, on. True. please be in the moment, focus on what you're doing, be aware and do that. If you want to have a Actually, conversation, sit down. true. Yes. Multitasking Yeah, is not a talent, but it is harmful at times. true that. And there are a lot of researchers who have said that it actually hampers you. We might think that yes, I can talk on phone and hide from the cops while I'm driving, but it is actually not a good sign. I mean, it In impacts you. this, I can say on a lighter note, it's a funny situation. Men are less stressful than women because of this reason कि उनके दिमाग में ना बॉक्सेस होते हैं. दे हैव बॉक्सेस इन देयर. उनको एक टाइम पे एक ही काम करना होता है. यू टेल देम टू ब्रिंग 10 थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, दे विल डेफिनेटली फॉरगेट 5 थिंग्स बिकॉज उनका बॉक्स एक ही वे में चलता है. यू कैन नॉट क्रॉस. वेयर इज वी एज फीमेल्स एंड women, they've got this habit of multitasking. They've got 10 things to do and then they get stressed out because of this, Yes. because they are going on with so many things in their head. बच्चों को स्कूल के Head, लिए तैयार yes. करना है, गैस पे दूध चढ़ा है, डोरबेल बज रही है, मेरे फोन पे व्हाट्सएप आया है, स्कूल का कुछ मैसेज है. there are lot many things which are going, as you said, Yeah. that is actually not good. You should focus at one thing on a time. Yes. Very And well especially explained when you're again. having conversation, Shweta, and when you're having a conversation with a sensitive person. And guys, as our parents are aging, or for that matter, any person, even a young generation or any person you're talking to, be sensitive. Be sensitive when you're having a conversation. Even if you're making a criticism, like a constructive criticism, have patience and give them time and value, to the conversation that you're making. That will make all the difference. And then you can have, I think that will also help us to have better relations with anyone and everyone. Yes, talking about that and coming to that, I would again like to ask you, Saiba, that there are, as you said, that there are people who will repetitively talk about it without, they will not know that they are emotionally disturbed. So, Yes. how to handle those people who are disturbed and whose behavior will affect us also? Yes. Repeated. So how to handle them without further distressing them emotionally, as well as maintaining our mental health also. We should not also Okay. not get affected to it. So how should we deal with Yeah. them? I think I would suggest a sandwich method for it. It's called a sandwich Okay. method. Um, you know, Okay. so what happens is supposedly, Shweta, okay, I'll take my example. I'm the negative person. Supposedly so guys, from today, let's not name any person as negative. I'm the person who's not desired, or somebody who talks negative, or somebody who talks about something which is not comforting, okay? To Shweta for now. So you know that I am vulnerable and I am going to talk about all the crap that you don't want to listen. But because you're my best friend and you have to listen, how will you put it across? क्योंकि श्वेता ये होता है क्या है, यूजुअली हम अपने क्लोज रिलेशंस में ही नहीं बात कर पाते. हम अपने क्लोज रिलेशंस में ही नहीं बोल पाते, जबकि स्ट्रेंजर से बोलना हमारे लिए आसान है, क्योंकि स्ट्रेंजर से आप मिलोगे, you'll be like, इससे मुझे दोबारा नहीं मिलना. ठीक है. वर्क प्लेस में भी आप कहीं हाँ. ना कहीं बाउंड्रीज बना लोगे.
But when it comes to your manager, or when it comes to your brother-in-law, your sister-in-law, your mother, or your father, sometimes their conversations can also be very draining for you. But वहां पे आ जाती है तमीज और हमारे संस्कार, और हमें लगता है कि मैं ये बात कैसे रखूं आगे, अब तो मैं बोल ही नहीं सकती, मेरी मम्मी Hmm. पापा पे बात आ गई है. But if you're feeling it and you will not convey it, you're gonna suppress those thoughts. And आज नहीं तो कल होता है ना कि आप जितना दबाओगे वो उतना ही बड़ा निकलेगा बाहर. 6 महीने बाद you will land up fighting or something. If you have to really convey, sit down. First is sitting down, which is very important. And timing. अगर आप उनसे बात कर रहे हो कि आज मैं अपनी सपोज मैं अपनी मदर को जाके बता दूंगी कि मुझे वाला बिहेवियर पसंद नहीं है, और मैंने टाइम चूज करा है, घर में 50 मेहमान आए हुए हैं, और मैं सबके बीच में ले जाके मम्मी को किचन में ले जाऊंगी और मैं बोलूंगी, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग टाइम, isn't it? When you, True. so the It right, the is. timing matters a lot. So pick up a time when you both have a comfort to talk, and when you, it's just the two of you. If you have a problem with someone, talk to that person, not the entire society about it. क्योंकि अगर सॉल्यूशन मिलना है तो आपको इसी इंसान से मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगा. Then ask, is that person available to talk, और do they, अगर आप, मैंने बोला कि चलो ठीक है आज पार्टी खत्म होगी, कल मैं सुबह उठ के अपनी मदर से बात कर लूंगी, and 10 o'clock I'm in her room, mom, I want to talk to you, and she's leaving for market to buy some grocery, and I start, and she'll be like, मुझे खाना ले सब्जी लेने जाना था, 2 बजे लंच का टाइम, and she'll be like, I don't want to listen to your nonsense. Again a wrong time. Also, you did not ask for the consent. Please do talk. And when you're talking, ask that person, is that person available to listen and have a conversation? Then, what your tone will be will also make a difference. Now, if you have to really start a conversation where you have to tell the negative thing, apply the sandwich method. पहले दो बातें अच्छी, then you're going to bring the negative thing that you want to talk, and then दो बातें Okay. फीडबैक में. तो दो बातें अच्छी कैसे, कि मम्मा आई रियली लाइक कि आप सबके लिए बहुत काम करते हो, आई रियली लाइक कि आप सारा दिन किचन में लगे रहते हो, एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल. ठीक है. अब इससे क्या होगा श्वेता, एक तो आपने टोन सेट करी, आप उस इंसान में सिर्फ नेगेटिव नहीं देख रहे हो, तो आप उस इंसान में Hmm. पॉजिटिव भी देख रहे हो. सो आई एम नॉट आस्किंग टू फेक इट, बट आई एम जेन्युइनली आस्किंग टू मेक रियल टाइम Genuine. कॉम्प्लीमेंट्स Yes. एंड रियल टाइम पॉजिटिव थिंग्स. क्योंकि अगर आप सिर्फ नेगेटिव देखोगे ना, कभी आपकी टोन लोअर डाउन हो ही नहीं सकती. सो लुक फॉर टू गुड थिंग्स एटलीस्ट, स्टार्ट विद दैट, एंड देन कम यू कैन से कि मम्मा आपने मुझे उस दिन ऐसा ऐसा बोला सबके सामने, वट एवर यू फेल्ट बैड अबाउट, एग्जाम्पल है ये, आई डिड नॉट रियली लाइक इट, आई फेल वेरी अनकंफर्टेबल, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट. और या आप जब भी उन लेडी के बारे में बात करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और इफ योर मॉम्स बिहेवियर इज अफेक्टिंग यू, मम आप जब मुझसे चिल्ला के बात करते हो, आई फील really not nice about myself, I start having self doubts, can you find me a solution because you're my mother and I know you can give me a solution, can we work something. सिर्फ दो तीन रिएक्शंस हैं. अब उनका मूड हाँ. कैसा है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, बट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. True. एंड यू नीड टू कम्युनिकेट. उसके बाद यू गोना गिव अ फीडबैक. नाउ फीडबैक मीन्स व्हाट, कैन यू गोना आस्क her, कैन वी वर्क आउट अ सॉल्यूशन विद इट, can we avoid this lady at our place, or can I not be there when she is coming home, और अगर सिचुएशन आपको उनका भी है, can you please talk to me in a more better tone next time, or can we not talk gossip about someone. Have that and say, I know I trust you, it might take time but I wanted to communicate with you. बट True. अगर उस चीज में सामने वाले इंसान को गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसमें अगर आप भी गुस्सा करने लग जाओ, you start reacting, then there's no point of having this constructive criticism. Then you're actually making destructive criticism only eventually. You need to have your patience, you need to find time and space, and you need to be polite enough to tell. अब श्वेता, यूजुअली हम किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप में ये कमी है और मेरे में ये मैं इस चीज में बेहतर हूँ. अगर हम वो हाँ. चीज हटा दें और हम ये सोचे कि मेरे में भी कमियां उनमें भी हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू वर्क इट आउट and it's okay. So then your tone, your way of communication, everything will be fantastic, and yes, people will listen to you. This might come with True. I practice agree. because you have to work on your patience, and you have to work on a lot of We things, need to believe, but you right, need to communicate. Sahiba? We need to believe that we are not perfect.
we need to believe that first. You know, people have a notion of this perfectionism कि हाँ True. मैं तो perfect ही हूँ, सामने वाले में कुछ गलती है. Yes. When True. that is erased from our mind and we start believing that okay, even I have certain faults, even the opposite person has certain faults, and we to combine and work on it together, things are going to be really beautiful. Yes. वो फिर Yes. इमोशनल डिस्टर्बेंस या ड्रेनिंग नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप में, बीट मदर डॉटर, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ, टू बेस्ट Yes. फ्रेंड्स, or anybody like brother, sister, or anyone. I guess it's very Anyone. important for anyone to be that accepting True. of your own flaws as well as Behavior. the opposite person's flaws. We need to accept the flaws of everyone. Everyone has a flaw. And I think, Shweta, this comes rightly with when you start practicing self-love. Like I propagate self-love everywhere, so I'm gonna bring it even here in the conversation. When you practice self-love, you accept your flaws and your good things compassionately and with a kindness. You'll be more grounded, you'll be more kind. And when you start becoming more kind to yourself, you definitely become kind to others. Because अगर आप Yeah. अपने में accept कर सकते हो ना कमियां, तो आप किसी में भी कर सकते हो. बिकॉज हमें हमेशा ये लगता है कि मैं फुल प्रूफ परफेक्ट पर्सन हूँ, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है वो आसपास है. एंड देन वी लाइक ओके, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर लेगा तो मेरा रिलेशन बेटर हो जाएगा. बट ट्रस्ट मी गाइस, इंसान कोई भी हो, प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर इंसान का नजरिया डिफरेंट होगा उसको देखने का. किन्हीं किन्हीं के लिए मैं बहुत अच्छी हो सकती हूँ, किन्हीं किन्हीं के लिए मैं सबसे बुरी लड़की हो सकती हूँ. बिकॉज इट्स अ डिफरेंट परसेप्शन, एवरी वन विल परसीव इन अ वेरी डिफरेंट वे. But what you truly believe in, what you know, have for yourself will make all the difference. So be compassionate with yourself, be kind to yourself, and then be kind to others as well.